और एल्स तमे जो वीडियो पठा होची सेटू स्क्रीनशॉट नेकी करि परिबो। A distributed operating system is a type of OS that connect multiple computer systems through a communication channel to perform the job that require multiple CPU. The individual system have their own processor and memory and communicate with each other through the high speed buses or telephone line. Distributed operating system, it connect the multiple computer system through a communication channel. माने मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को से कनेक्ट करियो। इट मींस इट इज एक्टिंग एज ए सर्वर। एटा गोटे निजुको सर्वर रूपे कंसीडर करा जाए। ए सर्वर सहित सबु सिस्टम गुडाक कनेक्टेड रहिबे। सबु सिस्टम रो मेमोरी अलग रहिबो, तांकर स्पेस सबु अलग रहिबो। ओके, okay. The individual system have their own processor and memory and communicate with each other through the high speed buses and telephone line. The bus is not a Modbus. This bus is a what communication port. हमें पढ़ी बस पढ़ी तो ये बस कम्युनिकेशन बस जो रही से बस थ्रू रे माने कनेक्टेड है। ओके, माने गोटे आमे कहबा गोटे नेटवर्क, आमे कहबा गोटे स्विच गोटे कहबा। ओके, माने एटा गोटे बोर्ड रहउची, बोर्ड रे आमे मल्टीपल केबल कनेक्ट करूची। सेमते नेटवर्क रा गोटे स्विच रहउची, से स्विच रे सब जाक डिवाइस कनेक्टेड रही। एटा को जगह रे यूज हबो रिसोर्स शेयरिंग। ओके, रिसोर्स शेयरिंग माने सबु जाक कंप्यूटर जदि गोटे कम्युनिकेशन चैनल रे कनेक्ट हेबे ताहले धर मो पाखरे 50 सिस्टम अछि, 50 सिस्टम पे मते 50 प्रिंटर की 50 स्कैनर दरकार। मो गोटे प्रिंटर रे 50 यूजर्स कैन गिव ए कमांड। ओके, transparency, the individual nodes seamlessly integrated into the global system. Individual node seamlessly integrated to the global system. यदि हमें नेटवर्क रहिबा गोटे सिस्टम मल्टीपल कंप्यूटर सहित कनेक्टेड हे पाए। Fault tolerance, most distributed systems are made up of multiple nodes that interact, so if the machine fails the system can continue the function. Distributed channel रे यदि हमर 50 टा सिस्टम अछि कनेक्टेड है जंते ऑफिस रे, यदि मोर गोटे सिस्टम खराब होची ताले मोर काम बंद हे जिवो। आ 49 से माने एक्टिव रहिबे आ तांको द्वारा मु काम करै परि। ओके, बिकॉज़ इट इज ए शेयरिंग रिसोर्सेस। अर्थ होची मु जहा काम करूची अन्य मशीन रे भी सेही डाटा अवेलेबल रही। ओके, नेक्स्ट इज डाटा अवेलेबिलिटी। डाटा अवेलेबिलिटी माने जेहेतु आमे रिसोर्स शेयरिंग करि परिबा। मोर धर डी ड्राइव अछि, आमे हार्ड डिस्क को डिफरेंट पार्ट रे डिवाइड करले डी ई एफ करके डिवाइड करले, तो मु कोन करिवि मोर ड्राइव टा को शेयरिंग करि परिबि। नेटवर्क रे जते बेले मो ड्राइव टा को मु शेयरिंग करूची आ गोटे कंप्यूटर जदि नेटवर्क रे अछि मोर नेटवर्क एड्रेस देखि से मोर ड्राइव टा को एक्सेस करि परिबो। अच्छा, हमें नेटवर्क एड्रेस केमिति पाइबो? गोटे कंप्यूटर रे नेटवर्क एड्रेस टा कोडु आसे? तो जते बेले कंप्यूटर कोन से इंटरनेट रे कनेक्ट हबो तो से समय कौन हुए तार गोटे आईपी एड्रेस जनरेट हो। कौन सी सिस्टम रो आईपी एड्रेस तमे जानिबा को जदि चाहूछ तमे कमांड प्रॉम्प्ट एटी रन करिवो। जस्ट यू राइट आईपी कॉन्फिग। आईपी कॉन्फिग जेता मारिबा एडी देखा IPv4 एड्रेस 192.168.29.146 एटा होची आईपी एड्रेस। तुम्हें जदि ए वाईफाई रे कनेक्टेड अच्छा माने देखो 146 जन पिले कनेक्टेड होते बोले बोले मु 146 टा सिस्टम है। तमे जदि वाईफाई रे कनेक्ट अच्छा तम मोबाइल रे भी गोटे अछि एपीके अछि ताको रन करले तमर आईपी एड्रेस भी जणा पड़े। बुझी होची जदि तुमे कोनोसी जगह रो काहा को फ्रॉड करूचो, हैरेसमेंट करूचो, मनी मागुचो, से तमठू तम आईपी एड्रेस माध्यम रे तुमको जानि परि। तुम कह सर मु तो सिम चेंज कर देछि, मु मोबाइल पाइले मु सिम चेंज कर देली
मते धरिवे केमती इंटरनेट जदि तमे यूज करूचे तुमर सिस्टम रो आईपी एड्रेस ता से ही रही जीवो तम आईपी एड्रेस थ्रू रे मु तुमको जे कोनोसी जगह रे ट्रैक करि ताले आईपी एड्रेस ताले हैकिंग केमिति होउछ आर गोटे बाट अछि जदि आईपी एड्रेस हमें चेंज करि दबो ताले हो आईपी एड्रेस चेंज केमिति हो हमें डिफरेंट नेटवर्क को गले आईपी एड्रेस चेंज किंतु मु को आईपी कोठी कनेक्ट करूछि से मते जानि दे ताले मते ट्रैक केमिति करी तमे जते बेले मोबाइल किणुच दीटा सिम स्लॉट रहउछि ता भीतर गोटे आईएमईआई नंबर रहउछि से नंबर केबे चेंजेस हो नै नेटवर्क पाइबो माने इंटरनेट पाइबो माने तमरो आईएमआई नंबर थ्रू देउ तुमको से ट्रैक करनो जे तमे को लोकेशन रे अछ आ कोठी का को फ्रॉड करूछो कोन फ्रॉड करछो से बुझियला ताके सर मु सिस्टम रे करिवि तो सिस्टम रे करी हो तादरे तो सिम नहीं आईएमआई नंबर नहीं तो ट्रैक केमिति करिवो तो सिस्टम रे कोन अछि सिस्टम रे गोटे मैक एड्रेस अछि एमएसी मैक एड्रेस रो प्रथम दीटा चारटा ऑक्टेट तार रहे प्रथम दीटा ऑक्टेट प्रथम दीटा वैल्यू जोटा रहे चार चारटा करके चारटा ग्रुप थी 4 4 4 4 16 डिजिट रहे प्रथम चारटा होची कंपनी रो एड्रेस सेकंड होची से जो डिवाइस ता देला तार सीरियल नंबर केते आउ दीटा रहिला तम कंप्यूटर रो सीरियल नंबर तमर जो नेटवर्क सब यूज कर तमे सब करि परिबो मैक एड्रेस बाबू चेंज करि परिबो नाही कोनोसी जगह रे धर गोटे सॉफ्टवेयर तमे आमे ए जिंस केमिति होउछ तमे जते बेले तम कंप्यूटर रे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करूछ गोटे फ्री सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करूछ तार ड्यू जते आसी जाउची 1 मंथ पर से केमिति जानुची जे तमरो ड्यू पूरी गला तमे कोन करियो तमे आउर चले कि तमे कहि सर मु जते मासे हे जियो अनइंस्टॉल करके आउर इंस्टॉल कर पुनी न्यू हे तारे जो सॉफ्टवेयर वाला थियो से कोन जते बाली जाई तुमको 1 मंथ फ्री ट्रायल देला तापर पुनी तुम अनइंस्टॉल कर दलो तमे कोन आउ गोटे मेल बनेइबो और अंशुमान नारे मेल अछि से सिद्धार्थ नारे मेल कर कनेक्ट कर दो हे जो किंतु तमे ना चेंज करि परिबो किंतु तमरा मैक एड्रेस चेंज करि परिबो नाही तारे पुनी केमति हैक करिबि तार मदरबोर्ड चेंज करिबि लास्ट ऑप्शन है मदरबोर्ड जदि चेंज करिबि हो मदरबोर्ड चेंज करी ताले कोन असुविधा हो कंप्यूटर कॉस्ट जति मदरबोर्ड कॉस्ट पाखा पाखी तार 70% सिले तो तारे भीतर सब जिंस ही माने कंप्यूटर टोटली बॉडी हार्ट माने जा कोइ परिबो से सब मदरबोर्ड रे और हैकिंग करिवा एते सहज जिंस किछ ना किछ जीवरे तमे धरा पड़िबो multi-programming operating system. A multi-programming operating system may run many programs on a single processor. What a single processor रे हमें many program run करी परिबा. Your mind is a multi-programming. केमती पाठ पढुतबा समय रे छुट्टी हेले बाण के जीवी मुंडरे चलतो होला लुडुन भया पिला माने खोजुथिबे कोन खाइबी एबे गले लड्डू आनिबी ये आनिबी सी आनिबी किनी घर कोन ऑर्डर कर होला अब बदमाशी कैटेगरी पिला माने कोन गोस्तिबे आज गोटे चाइना बम आनिबी नले नडिया बाण आनिबी हां विश्वजित मते हैरान करूची ता रूम आगे फुटे सोइतो ढो तेनु देखो कथारे अछि इट कैन नॉट कंट्रोल योर माइंड आ जे माइंड को कंट्रोल कर देला से लोक सब जिंस जय कर दी ओके द आर्ट सिटिंग हियर बेले बेले कौन हुए तमे लेक्चर गोटे लोक लेक्चर सुनिवार धैर्य केते समय थे 40 मिनिट
40 मिनिट पर कौन हुए ना माइंड डाइवर्ट हो से लेक्चर जिते बोरिंग लेक्चर हो जिते टैलेंटेड लेक्चर हो तमे 40 मिनिट जे शुणी पार 40 मिनिट पर सी जब तुम माइंड को डिस्ट्रैक्ट न करूची ताले तुमको क्लास इंटरेक्ट बुझे आमर गोटे था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पाठ कंप्लीट थ्योरी 11टा बेले क्लास हुए खाई देकी पेटे जाइए मुझे कौन करे जो पोल पछपटे बस एसी मो पछड़ लगी ओ जो बढ़िया निद आसे एमती गोटे मास मु अतिक्रम कर तापर मास मु धरा पड़ी तापर सीधा ओके मल्टी प्रोग्रामिंग अर्थ हूँ कौन आमे मोबाइल टाको मल्टी प्रोग्रामिंग कहि परिबा नाही गोटे स्क्रीन जेताले ओपन करछ आ गोटे स्क्रीन पछरे जाउछि नले क्लोज हे जाउ यूट्यूब जेतेबेले ओपन करूछ बैकएंड प्रोसेस रे काम करूछ यूट्यूब ओपन करो व्हाट्सएप ओपन करो यूट्यूब कटि बैकएंड रे बोबोछि जदि सब्सक्रिप्शन न बोबे नले बोबे हो तीनटा एप्लीकेशन एका संगे चले परिबो कंप्यूटर जो मोबाइल रे हवन यू कैन स्प्लिट टू स्क्रीन दीटा स्क्रीन एटलीस्ट तुम करि बट multi programming is what at a time you can run many application मु वर्ड रे टाइपिंग करथुवा समय गीत सुनी पारि एक्सेल रे सेपटे प्रिंट मारुथि हले बैकएंड रे बहुत प्रकार प्रोसेसिंग मोर चलुथि मल्टी स्क्रीन ए देखो मल्टी स्क्रीन सब ओपन अछि मु टैब जदि मारुथि देखो मल्टी स्क्रीन ए ओपन लॉट ऑफ स्क्रीन इज वर्किंग बुझि होछि ना in other program are ready to use CPU as a result various job may share the CPU time बुझे होची आमे जो मूवी देखी देबा जो रांचो रांचो कौन से थ्री इडियट्स से जो लेक्चर असी दी हाथ रे लिखुथियो सोया समय दाढ़ी काटुथु ने दी हाथ रे लिखि सॉल्यूशन करथुओ फॉर लिमिट द टाइमिंग मींस मल्टी टैलेंटेड एपड़े एपड़े आंसर एपड़े सॉल्यूशन बार तो एपड़े क्वेश्चन लिखा ओके मींस एट ए टाइम से दीटा ता माइंड कम हो ताले कौन हबो प्रथम काम होची टाइम मोर सेव हो बुझी होची मु खाइबा समय रे जदि टैक्स करिवि टाइम भी सेव बुझी होची मुड़ी खाउथिबि यारे टैक्स करथिबि हां गीत सुनला बेले टैक्स देखुथिबि हां कान रे देकी पागल प्रजाति लोक सब अछन सर केमती गाड़ी दउछ ओके यारे गीत सुना होतबो दिल में मेरा दर्द डिस्को यारे चलते हो लेका फिजिक्स सॉल्यूशन हो तो हां सी भी डिस्को 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 ही चलते ओके so basically what happened जदि मल्टी प्रोग्रामिंग जदि हम एग्जांपल नबा at a time in same time the four classes is going on in the four classroom मु जदि कोन करिवि गोटे क्लास मु रन करिवि ओके so four batches at least two classes is going on so 4 into 2 8 hours मु जदि 4टा बेले क्लास स्टार्ट करिवि राति 12टा रे पिटा करू गॉट इट किंतु आमे ताको कोन करू छे when it is divided in the room then in the 2 hours or 3 hours all the classes is complete बुझिए मल्टी प्रोग्रामिंग कौन कला टाइम सेव कला एफिशिएंसी को यूज हला सपोज दिस टोटल बिल्डिंग स्क्वायर फीट इज 2000 स्क्वायर फीट 2000 स्क्वायर फीट रे मुझे तरह मु क्लास करूचे मु ओनली आई हैव कंडक्टेड द 500 स्क्वायर फीट किंतु आउ 1500 मु से समय यूटिलाइज करू ता माने मोर एफिशिएंसी टाको मु यूटिलाइज करू the capacity of the system is not utilized RAM जदि 8 GB रखिछि 16 GB रखिछि प्रोग्राम भी मते सेति की रे रन करिवार अछि अदि रन न करिवि ताले मोर 16 GB रे कोन से काम
मतलब लो जीबी रैम रे काम करियो बुझिला कि this multi programming again it is divided into the two part, multitasking and multi-user. Multitasking or multi-programming it is called, and in multi-user that is called as multi-threading. So what is that? We go to discuss kariba. First is multi-programming operating system. जी confusion लागुनी गोटे मु प्रथम कोन कहली प्रथम मु कहूची मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम रे एक्चुअली कोन सब रो एटा होची हमर दी प्रकार होची मल्टी टैक्सिंग एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग multitasking operating system is in multi programming you can do the multitasking अरे प्रोग्राम तो मु ओपन कर कोई टैक्सिंग कथा सर कौन तो गोटे प्रोग्राम रे मल्टीपल टैक्स होउची कि नाही हो जी ଗୋଟେ एग्जांपल दे परियो हम दे परियो मोठी वर्ड ओपन कली एमएस वर्ड here ये तळ पाटा मार्क करियो कोन लिखा है देखा कि लिखा है हां लिखा हां कोन लिखा है बताओ लिखा ए स्क्रीन टा तो बड़ कोन लिखा है देखो 16 of 16 239 words. Okay. Now check when I type automatic what happened? The word is counted. प्रथम केते थिला 239. So when I type केते आसिला. So when I type at that timing it is counting the words
It is also counting the lines as well as the document is auto save. माने गोटे समय तीनटा जिनस हैला से मते लाइन नंबर काउंट कला वर्ड नंबर काउंट कला और प्लस मो डॉक्यूमेंट को सेव कला. So that is called as the multitasking. At a time, multiple work is performed. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି ମ୍ୟୁଜିକ ପ୍ଲେ କରୁଛି ସେ ସମୟରେ କଣ ଆସୁଛି ମ୍ୟୁଜିକ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି କେତେ ଟାଇମ ମୁଁ କ୍ରସ୍ କଲି ତାକୁ ଦେଖଉଛି କେତେ ଟାଇମ ଆଉ ରହିଲା ବି ସେଇଟା ମତେ ଦେଖଉଛି ତ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ କେତେଟା କାମ ହେଲା ମ୍ୟୁଜିକ ଶୁଣିଲି ଟାଇମ elapsed ଦେଖେଇଲା ଟାଇମ ରିମେନିଂ କେତେ ଅଛି ବି ଦେଖେଇଲା ବୁଝି ହଉଛି so it is performing multiple tasks at the same time that is called as the multitasking operating system. तो मल्टीटास्किंग रे कोन आसीबो तो मल्टी प्रोग्रामिंग रे हमर कोन आसीला गोटेला मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होया मल्टीपल tasks is going on at the same time. Multi user operating system basically your operating system is designed for doing only one work केवल गोटे काम करि परिबो बा गोटे यूजर काम करिबो अर्थ होची तुमको जदि मु एबे मु लैपटॉप रे केवल मु ही ऑपरेट करू एबे तमे ऑपरेट करू छ करू मु जदि कहबे पिला माने तमे जूम रे कनेक्ट करो तापर मु जहा क्वेश्चन देबे किमा जहा भी ये अछि तमे लेखो तमे करि परिबो कोन ना सेठी अनोट ऑन करिवो अनोटेशन रे तुमे लिखि परिबो मते से जिंसा डिस्प्ले हो आ तुमे समस्त एट ए टाइम जहा जे चाहिबो से लिखि परिबो ए जगह using of annotation and it is displayed to everybody ये मो सीक्वेंस सीरियल नंबर दे देती एते के पिला एते के सीरियल नंबर समस्त से लाइन में लिखियो तो पर्टिकुलरली समस्त एट ए टाइम लिखि पारि तो गोटे टाइम रे समस्त कोन कले ना लिखिले तो सेटा मोर हेला कोन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग बुझिला माने मु एट ए टाइम समस्तन सहित इंटरैक्ट कली आ सब पिला माने से समय रे निजे निजे किसी टैक्स सेठी करके मते देखे बुझिला so in multi programming operating system it is a form of parallel processing in which number of program belonging to different user are kept simultaneously in distinct area in the main memory. It is a parallel processing in which number of program belonging to the different user are kept simultaneously in distinct area in the main memory. अर्थ होची माउस कर दे एक्सटर्नल बैक के बाद एक्सटर्नल माउस ड्रॉ पड़े वाला let's suppose it is one operating system I am allowing at a time 5 user can work तो समस्त से मेमोरी टा को मो पांचटा पार्ट रे मो डिवाइड कर दे बुझिला तो समस्त कोन करिवे निज 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 एरिया भीतर काम करिवे you are the part of ना मेन मेमोरी so this person मु कोन करिवे ना एई जगह रे मु ट्रैकिंग करिवे निजु okay so I am sitting I am tracking the total part and you are working in your part तो सेम स्पेस को मु डिवाइड कर देली तुमे तुम जगह रे काम करिवो किंतु सबमिट सब को जगह रे हैला मेन एरिया भीतर आसे तो मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर शुड बी लार्ज एनफ
to keep several programming. Multi-programming operating system is an attempt to increase the utilization of CPU. The CPU ର ଯେତିକି power ଅଛି ସେତିକି ସେ use କର. This technique reduces the idle time of the CPU. ଅଳସୁଆ ହେଇଯିବା. ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ମୋର 2000 ସ୍କ୍ୱାର ଫୁଟ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ 500 ସ୍କ୍ୱାର ଫିଟ ରେ କ୍ଲାसेस କଲେ କିନ୍ତୁ 1500 ସ୍କ୍ୱାର ଫିଟ ଖାଲି ପଡୁ. ତ ଏଟା ୟୁଟିଲାଇଜେସନ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କର ଯଦି ସବୁ ଯାକ ପାର୍ଟିସନ ନାହିଁ ଥାନ୍ତା ଏସି ଚାଲି ଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ପିଲା ହେଲେ ବି ଏସି ଚାଲିବ, ମଲ୍ଟିପଲ ଲୋକ ହେଲେ ବି ଏସି ଚାଲିବ. ଯଦି ଗୋଟେ ଚାଲିଲା ତାହେଲେ ପୁରାଟା ଏସି ତାହେଲେ ଚାଲୁଛି. ଇଟ୍ ଇଜ व्हाट कंज्यूम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अधिक बुझे कि नहीं. Several program are resident of the main memory but CPU execute one programming at given time. किंतु जेतबे प्रोसेसिंग करिवो गोटे जिंस को से प्रोसेसिंग करिवो अर्थ होची यू आर सिटेड ओवर हियर, तो आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू पीपल, बट जेतबे मु आई कांटेक्ट करिवि एट ए टाइम मु जण को ही आई कांटेक्ट करि परिबि, समस्त को करि परिबि नै. इज इट ट्रू और नो? बुझियो आमे केवल गोटे जिंस आम पाखर अछि आमे देखि परिबा, किंतु आमे जब फोकस गोटे जगह करूचे तो हमर माइंड टा केवल से जगह रहउ, हमर आई कांटेक्ट से जगह. बुझि लगने हम मल्टी प्रोग्रामिंग रे मल्टीपल प्रोग्राम रन हमर अछि, किंतु एट ए टाइम केवल गोटे प्रोग्राम ही हमर चली परिबो. Next is multi-threading. It is the very interesting thing and it is present in the programming language also. एटा पिला माने बहुत से बुझिबो. Threading is what? Now, threading is the independent execution path within a program. आउथरे कहूची independent path of execution within a program. जेते बेले मु कॉल करबी जणको, मु जेते जणको कॉल करूची, आ गोटे लोक से समय जति मते कॉल करिवो ताले ताको कोन शो करिवो? You're busy. कौन सी हो इधर? नहीं मु गोटे क्वेश्चन बोले तुम मते मल्टीपल क्वेश्चन. मु फर्स्ट क्वेश्चन करली जे मु जनक सहित कॉल होची, थर्ड पर्सन मते कॉल कला ताले ताको फर्स्ट कोन देखियो? वेटिंग. कॉल इज वेटिंग. मु वेटिंग एक्टिवेट करी, कॉल इज वेटिंग देखेला. फोर्थ पर्सन जे तारे कॉल करियो कोन देखियो? सियोर वेटिंग. ट्राई करिया वेटिंग देखेबो तुमको एट ए टाइम दीटा लोकर वेटिंग देखौची. एट ए टाइम दीटा लोकर वेटिंग देखोनी तर कॉल डिस्कनेक्ट कोचा रे तो कॉल टा के लागो नथला तर ताको कोन देखेबो? कॉल इज बिजी. जेते बेले मोर कॉल सरीबो जे वेटिंग अछि सी आसीबो कॉलिंग को, जे बिजी अछि आसीबो वेटिंग. This is called as the pooling system. Pooling is the concept where one program is executed at a one time. गोटे समय रे केवल गोटे प्रोग्राम चली परिबो, किंतु मते मल्टीपल यूजर से तो काम करबा को हेले मते इंटरेक्शन समस्त से तो दरकार. आंधी जे प्रथम आसे अच्छा बस्ता वेट करता हूं. ओके तो थ्रेडिंग इज व्हाट जेते बेले हमें गोटे बैटलफील्ड गेम खेलिबा से समय रे हमर बम टा एक्सप्लोजन हो, हॉट टा डिसअपियर हो, तापर सब जगह स्मोक आसी. बुझिला कि नहीं?
The designer of the battlefield game shows the smoke show करिवो आउ ए सब जिंस at a time हो. So threading is a independent path execution within a program जोटा कि समस्ते गोटे जगह रे इंडिविजुअली समस्ते काम करि छथि. जेमते मो वर्ड रे जेतबे टाइपिंग करूची से समय लाइन नंबर काउंट होची, वर्ड नंबर काउंट होची, ऑटो सेव. सो सी जगह रे कोन हुए आमर थाए कोन मल्टी प्रोग्रामिंग गोटे थाए, मल्टी प्रोसेसिंग गोटे थाए. मल्टी प्रोग्रामिंग अर्थ होची गोटे सिस्टम रे मो मल्टीपल प्रोग्राम यूज कर परिबी. मल्टी प्रोसेसिंग हेले गोटे प्रोग्राम भितरे मो मल्टीपल टैक्स गुरा करि परिबी. इट इज बिकॉज ऑफ द थ्रेडिंग. Because of the threading you can do lot of work at the same time. The multi-threading is the ability of an operating system process to manage its used by more than one user at a time. It also have the ability being manage multiple requests by the same user without having to have multiple copy of the programming running in the computer. It also ability to even manage multiple requests by the same user without having to multiple copies. जेतबे यूजर रिक्वेस्ट पठेबो रिक्वेस्ट पठे चली दिबो से मल्टीपल कॉपी से बनेबो, गोटे कॉपी बनेबो आउ ताको हैंडलिंग करी. बुझे लागे नै मु कॉल करी रिसीव करे, कोई कॉल करी रिसीव करी, कॉल करी चल, किंतु से ताको गोटे कॉल हिसाब रे देखियो. हमु केतरा मिस कॉल देखो, 6 टा मिस कॉल देखो, से देखियो मिस कॉल अलर्ट और ही से हैंडल करू. The concept of multi-threading needs proper understanding of these two terms, a process and thread. A process is a program being executed. A process can be further divided into the independent units of thread. गोटे प्रोग्राम भितर मल्टीपल प्रोसेस थाले आउ से प्रोसेस होची इंडिपेंडेंट फाइल. ये केते बेले एग्जीक्यूट होबो ताको मु हैंडल करि परिबि नाही. जे इंडिपेंडेंट पाथ एग्जीक्यूशन विदिन ए प्रोग्राम. आज क्लास हला तमे जो सीक्वेंस रे बसिछ, it may not be happen that in another day you are coming and seated over in the same way. बुझे होची एटा सब बोले चेंजेस हो. बुझे लागे नहीं. तो threading is used widely in almost every field. Most widely it is seen over the internet nowadays, where we are using transaction processing of e-typing, recharges, online transfer, banking, etc. Okay, ए जो मल्टी थ्रेडिंग at a time हमर काम करूची. जेतबे तमे एका संगे स्कैन करलो पैसा पठैलो त से समस्त को सब टैक्स को एकाठी करिवो, किंतु प्रोसेस वन बाय वन करिवो. जेतबे हमें सेलून जाउचे से सब लोकन को वेलकम करूची, वेटिंग एरिया भीतर एसी फेसी दउची, पेपर दउची, तापर जण जण को नेकी छुट्टी कट, किंतु काहा को बोर करि दउनी. वेटिंग एरिया में इट इज feel like a comfortable and you cannot feeling bored. किछि गोटे विजुअलाइजेशन चालू दिवो, चा कॉपी चाली दिवो, तो से समय से कस्टमर बिजी फील करिवोनी. परम तार हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जोटा रहिबो से ऑर्गेनाइजेशन रो से आउरी अट्रैक्ट से कोन करिवो आउ 2 घंटा वेट करिया पे रख दियो, 3 कप चा मिलबो. तो मल्टी थ्रेडिंग इज जस्ट लाइक समस्त को एकाठी करिवो, समस्त को गोटे फ्लो रे रखिवो, तापर वन बाय वन. बुझे ना. So next class है आगु को हमें